So good morning friends, welcome to Raj Malhotra IAS. So guys, here we are about to start the session. Before the start, guys, please do press the bell icon so that you can get the notification. And apart from that, if you see the link which is available on our page, you can also press the reminder, okay, so that you can get the notification. आपको notification time पे मिल सके. हम अभी इस session को शुरू करेंगे. We are about to upload the PDF for today's session. So just give me a minute here. So I'm about to upload. So the PDF for today's session has been uploaded. You can download the PDF. अब जाके पहले PDF download कर सकते हो. So it has been uploaded on our Telegram group. Okay. So here we are about to start the session. जल्दी से शुरू करेंगे session without making much delay. मोहित, माही, पिंकी, पूजा, प्रांजल, हरिणी, बपन, प्रतीक, कीर्ति. Good morning all. So along with them, good morning to everyone here. Okay. So here sufficient number of people have already joined us. Let's start the session without making much delay here. तो सीधा जाके मुद्दे पे आते हैं और आज का जो है like this is Tarun Rahul, good morning. So this is what we have as first news. Okay, that is Supreme Court lifts stay on Haryana quota for private jobs. Okay, now Supreme Court ने लिफ्ट ये स्टे जो है ये हटा दिया. इट मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर कोटा सिस्टम विल बी एप्लीकेबल. ओके, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट लाइक दे वर नॉट कन्विंस्ड विद द आर्ग्यूमेंट्स मेड बाय द हाई कोर्ट कंसिडरिंग लाइक आपने किस बेस पे इसको स्टे किया है. सो दे वर नॉट हैप्पी विद द हाई कोर्ट एंड डेफिनेटली the debate will now start in Supreme Court. Supreme Court में case चलेगा. They will look into the merits and the demerits later. Okay, so this is what you need to understand. Like Haryana government, Haryana legislature, they passed a law saying that 75% of the vacancies which are there in a firm to be filled by people who are having the domicile of Haryana. तो जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल होगा उनको जो है वहां पे लगाना पड़ेगा. दिस इज एप्लीकेबल विद द like in the category of 30,000 salary. Okay, so where the salary is less than 30,000 in those particular like jobs only, 75% of the seats are to be reserved for the people who are having the domicile of Haryana. So this is what Haryana did. Now the point here is that there are a lot of things that are to be looked into. So बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम सेंट्रिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं. One thing is that this is not ease of doing business. ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है. बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अनदर एरिना और अनदर यू कैन से अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्टर राज. ओके, अब आप इंस्पेक्टर राज लेके आ रहे हो यहाँ पे बिकॉज डेफिनेटली समवन विल बी देयर टू रेगुलेट इट. कोई आप ऊपर बिठाओगे, देखोगे वेदर कंपनीज आर फॉलोइंग द रूल्स और नॉट. कंपनीज रूल्स फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही. अपार्ट फ्रॉम दैट द एडमिनिस्ट्रेशन, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, they have been given the powers. उनको काफी power दे दी गई है. Now you need to understand one thing. When you are giving power to the bureaucracy, it has been observed from the past experience that this is going to increase the cases of corruption. Corruption के cases भी यहाँ पे increase हो सकते हैं. Bribing के cases भी यहाँ पे increase हो सकते हैं. Okay, so instead of following the rules, the firm may try to bribe an officer. This is also quite possible. ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है. सो दिस इज हाउ दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड लाइक इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम विद शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड मैन पावर. अब आपके पास ऑलरेडी इंडिया के अंदर स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलती है. सो दिस शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड मैन पावर इट मे फर्दर इंक्रीज. ये और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है ना, मैन पावर की शॉर्टेज यहाँ पे है, ये शॉर्टेज और बढ़ जाएगी बिकॉज पीपल द टैलेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स दे विल नॉट कम टू हरियाणा. वो यहाँ पे आके काम नहीं कर पाएंगे. ओके, देयर कुड बी अनदर एंगल टू दैट बिकॉज द फर्म्स, द कंपनीज, द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दैट आर वर्किंग इन हरियाणा. अब जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हरियाणा में काम कर रहे हैं,
दे मे इवन थिंक ऑफ शिफ्टिंग टू सम अदर स्टेट्स, किसी और स्टेट्स के अंदर चले जाएंगे, ठीक है ना. सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम हियर दैट द बिजनेस माई शिफ्ट टू अदर स्टेट्स. अदर पॉइंट इज दैट इफ any of the firm is planning expansion, अगर कोई भी firm expansion plan कर रही है, so expansion plan will be impacted. They will not expand their production in India, in Haryana. हरियाणा में अपने प्रोडक्शन को वो नहीं बढ़ाएंगे. दे विल चूज दैट ओके लेट्स गो टू सम अदर स्टेट, राजस्थान, गुजरात, ओके, दो स्टेट्स विच आर नॉट हैविंग दिस टाइप ऑफ लॉ, इस टाइप का कानून वहां पे नहीं है. Another point that you have to understand is that like this Haryana is just opening up a, you can say, a new area of problem, because the point here is that if other states, okay, if other states they also start doing the same thing, वो भी यही चीज शुरू कर दें, ओके, दे ऑल्सो स्टार्ट कमिंग आउट विद द लॉ विद दिस दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, देन इट इज गोइंग टू बी अ मेजर प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस. सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज the point that are to be looked into is that we have a fundamental right that we can carry out our economic activity, our business activity in any part of the country without any restriction. Okay, हम जो है बिना एक तरीके से रुकावट के अच्छे से काम कर सकते हैं. वी कैन कैरी आउट आवर बिजनेस एक्टिविटी, वी कैन रिजाइड वेयर वी वांट. नाउ दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज देयर इन योर कॉन्स्टिट्यूशन. This particular step itself is somehow appearing to be anti to these type of fundamental right provisions. कहीं ना कहीं ये anti होता हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना. So this is the point that you have to understand. This is the point that you have to understand. ये बात आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी. Okay. So we'll move to the next part now. आगे चलते हैं यहाँ पे. So here we have this news: Singapore Prime Minister speech uncalled for, says India. This is what like Indian government is saying. So right now the Prime Minister has issued some of the statements. कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे बोली हैं जो कि हमें पसंद नहीं आई हैं, ठीक है ना. वो क्या चीजें हैं देखिए आप. So they are saying that like we are taking a stern view of the speech made by the like Singapore Prime Minister. Okay, he criticized that in India there is decline of Nehru's idea. नेहरू के आइडिया का यहाँ पे इंडिया में एक तरीके से डिक्लाइन हो रहा है. नाउ द पॉइंट हियर इज दैट लाइक दिस इज द लाइक दिस इज इंडिया. ओके, सो यू कैन नॉट क्रिटिसाइज if you want good relations with the present government. अगर आप अच्छे relations चाहते हो present government के साथ, you have to work with them. You should not criticize them. Such type of statements are very uncalled for. Okay, इस type के statement बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है ना. So this is the point that you have to understand. ये बात आपको यहाँ पे समझनी जरूरी है. Okay, so this is the angle. Now definitely we have issued the statement. हमने कुछ ना कुछ statement यहाँ पे issue की है. We condemned such type of statement. इस type की चीजें ठीक नहीं है. The other thing that he is saying that in India like we have MPs that face criminal charges. अब देखो सच तो बोल रहे हैं. What's wrong in that? What's wrong in that? And this is the, you can say, alarming time for our legislature to improve. Otherwise अभी सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, कल को किसी और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस टाइप का स्टेटमेंट देंगे. एंड दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट दैट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियन एमपीज दे फेस क्रिमिनल चार्जेस. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू लुक अपॉन. हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा इस चीज को लेके, हमें इस चीज को लेके इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा. ये बात समझनी जरूरी है, ठीक है ना, ये बात समझनी जरूरी है. ओके, so this is the angle that you have to look upon. Now before moving to that, triple S, okay, SSS is a student. He was asking it out, sir, can states make a law on this type of arrangement? Okay, so you need to understand primarily the law related to residing, or you can say if you want to come out with the provision regarding whether residing is allowed or not. Okay, the parliament can make a law, state cannot make a law, but we have to see how the court is going to look into this matter. किस तरीके से court इसको देखेगा. Now that's a debate, that's the debate that is going to be started. So now the matter is with Supreme Court. Supreme Court will definitely investigate whether it is constitutional or not. वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक. और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है कि दिस इज अ सेपरेट इशू. वी आर नॉट गोइंग इनटू द मेरिट एंड डीमेरिट एंड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी राइट नाउ. सीधा हम इस पे नहीं जा रहे हैं. सो वी आर जस्ट स्टेइंग द हाई कोर्ट ऑर्डर. ओके,
So they will now discuss the matter. They will look into this whether the state parliament or state legislature is allowed. क्या स्टेट लेजिस्लेचर को वाकई अलाउड है कि नहीं, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी देखना है. एज पर द प्रेजेंट प्रोविजन द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉ. स्टेट के पास नहीं है. इफ दिस इज टू बी प्रूवन, देन डेफिनेटली ये जो है कानून, ये प्रोविजन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा. ओके, सो वी हैव टू वेट एंड वॉच हाउ थिंग्स विल मूव अहेड इन दिस डायरेक्शन. So other than that, there is nothing much. Okay, so here we have this news here now. Start flights to Ukraine. Government is telling the airlines. So this is a good sign. Good sign in the sense they must have got some assurance from Russians. Russians से कुछ assurance मिल गया था Indian government को कि भाई हम लोग लड़ाई नहीं होगी. And definitely this is what contradictory to what NATO countries are saying. NATO countries are saying Russia is still sitting over there. But if it has been told to Indians that कि भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देन ओनली इंडियन गवर्नमेंट इज कमिंग एंड सेइंग दैट कि भाई अब जाके फ्लाइट शुरू कीजिए. ओके, अदरवाइज हम लोग बोलते ही ना. सो दिस इज हाउ अ न्यू थिंग हियर. ओके, सो अदर देन दैट देयर इज नथिंग मच. कुछ खास नहीं है यहाँ पे इस पेज के ऊपर. सो डायरेक्टली विल मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन. सीधा एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर जाएंगे, देखेंगे क्या है यहाँ पे. ओके, सो हियर वी हैव दिस एडिटोरियल सेक्शन. लेट्स मूव टू दैट. Okay, so we are heading towards that. Okay, chaliye. Yes, this is the editorial that is there. Now India has to still to get a good grip on the road safety. Okay, so the point here is that you need to understand what is the major problem. What is the major problem? Now I am asking this question to you. Whenever you talk about road safety, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस देश में? ओके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लाइक डू यू सीरियसली थिंक दैट वी डोंट इम्प्लीमेंट द रूल्स? ओके, हम यहाँ पे सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं हमारे यहाँ पे. व्हाट सॉर्ट ऑफ इशू अपीयर्स इन योर माइंड? आपके दिमाग में क्या ऐसी चीज आती है जब आप इस चीज को देखते हैं? सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज दैट इन इंडिया वी लैक the safety culture. Okay, we lack the safety culture. Now you can easily figure it out. Okay, कैसे? हम लोग we use helmets, ठीक है ना? We use helmets not because they make us safe. हमारे सेफ्टी के लिए है वो, हम उसलिए नहीं हेलमेट लगाते हैं. If you observe the two wheelers, we use helmet not because like it is safe for us, just because we want to evade the चालान. नहीं तो पुलिस चालान कर देगी, ठीक है ना? चालान के डर से, आउट ऑफ फियर, वी वेयर द हेलमेट एंड वी फॉलो द अदर, यू कैन से, सेफ्टी मेजर्स. नाउ दैट्स द मेजर प्रॉब्लम इन द इंडियन सिनेरियो. ये समझना पड़ेगा कि आपके कंट्री में सेफ्टी कल्चर आ ही नहीं पाता है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इन इंडिया वी लैक द सेफ्टी कल्चर. दिखेगा ही नहीं आपको सेफ्टी कल्चर. ओके, जस्ट टू इवेड योर चलान, आपको फाइन इवेड करने के लिए आप एक तरीके से इन रूल्स को फॉलो कर लेते हो, अदरवाइज वैसे नहीं. ओके, सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम दैट इज देयर, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू आवर बिहेवियर, इट इज रिलेटेड टू आवर माइंडसेट. हमारे माइंडसेट और बिहेवियर से रिलेटेड है ये. बट डेफिनेटली द जेंटलमैन ही इज कमिंग आउट विद फ्यू पॉइंट्स. ओके, काफी चीजें इन्होंने बताई हैं रोड सेफ्टी को लेके. Now he is saying that the center and the state, they should come together to improve and strengthen the road safety plans and infrastructure. He is very much right. Okay, so you need to understand one thing, like why state and center cooperation is important. State और union का cooperation इसलिए भी important है because when it comes to enforcement of the legal provision, जब आप enforcement की बात करते हो, it is to be carried out by the state. तो स्टेट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. पुलिस मैनेज करती है ट्रैफिक को. ओके, सो पुलिस इज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है ना? दिस इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड. नो डाउट our road minister like Nitin Gadkari, he had said multiple times that there is a target to reduce the accidents by 50% by 2025. Okay, and adding that, like he said that we can achieve the zero death by road accident by 2030. Now this target is really very good. टारगेट देखने में बहुत अच्छा है, बट द पॉइंट हियर इज दैट आर वी मूविंग इन दैट डायरेक्शन? क्या वाकई आप उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो? सर्टेनली नॉट. ओके, योर रोड्स आर स्टिल क्वाइट अनसेफ. बहुत ज्यादा अनसेफ रोड है. ओके, अपार्ट फ्रॉम द अनसेफ्टी दैट वी हैव, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, like speed is a major killer in India. Speed सबसे बड़ा किलर है यहाँ पे. Okay,
So that problem is, you can say, related to the enforcement. That problem is, you can say, related to the governance. बिकॉज हम ट्रैफिक रूल्स को इम्प्लीमेंट ही नहीं करा पाते हैं, ठीक है ना, हम ट्रैफिक रूल्स को इम्प्लीमेंट ही नहीं करा पाते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव अ मेजर प्रॉब्लम टू दैट, उसीलिए हमें जो है वो मेजर प्रॉब्लम दिखती है यहाँ पे। सो ये चीज समझने वाली है, ठीक है ना, ये चीज समझने वाली है। ओके, now he's saying that yes, definitely state center cooperation is important because when it comes to enforcement, the state have a major role. Okay, apart from that, there are few things that global convention, if you talk about, the world is very serious about road safety. पूरी दुनिया इस तरीके से ये काफी serious है. So we have UN General Assembly when they declared, okay, something called Global Plan for the Decade of Action of Road Safety. For 10 years they came out with this arrangement, and the target was that the road accident fatality to be reduced by 50%. अब ये टारगेट रखा गया था, इंडिया हैज नॉट अचीव्ड इट। ओके, इंडिया ने तो अचीव नहीं किया, बट देखते हैं क्या है। सो एज पर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ओके, इट शोज दैट in India, like 1,33,000 deaths were recorded, okay, primarily because of accidents. Okay, ये accidental deaths की बात हो रही है यहाँ पे, 1,33,000। Now you need to understand one thing, like it's a major loss to the economy. हमारी इकोनॉमी के लिए भी मेजर लॉस है। क्यों मैं बोलूँगा ऐसे? बिकॉज इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फैमिली। फैमिली का एक तरीके से इम्पैक्ट होता है इसके ऊपर। ओके, and apart from that, now if you compare, like if these 1,33,000 people, if they are insured, अगर उनका इंश्योरेंस है, ओके, नाउ लुक एट द अमाउंट दैट इज टू बी गिवन टू देम, कितना अमाउंट देना पड़ता होगा, ठीक है ना। इफ मिनिमल समवन इज हैविंग एन इंश्योरेंस ऑफ 2 लाख, 2 लाख का भी मिनिमम इंश्योरेंस अगर कोई कराता है, तो द नंबर इज क्वाइट ह्यूज। ओके, दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नो डाउट दे आर पेइंग देयर, यू कैन से, प्रीमियम एंड ऑल, वो सब अपने प्रीमियम पे करते हैं, बट द नंबर इज स्टिल वेरी ह्यूज। ओके, now, before this, definitely here when you talk about traffic management as well or reducing the accidents, Supreme Court has given some relief to us. Supreme Court से ही हमें कुछ relief मिला है. And I am saying this thing to you, these points are really very important, because if there is a question in your paper, the most probably the question will be in GS3. सो यू विल बी राइटिंग दीज पॉइंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको वहां पे लिखने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, एंड ईच वन ऑफ देम, ईच पॉइंट दैट हैज बीन मेंशन्ड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। सो लाइक दिस सुप्रीम कोर्ट looked into the matter, and Supreme Court constituted a committee on road safety under the chairmanship of Justice K.S. Radhakrishnan. Okay, so this committee was formed. The committee came out with the recommendations as well. Committee ने अपने recommendations भी दिए। Okay, everything was done. Now in this particular point, जब recommendations वगैरह सब कुछ आ गए, but the major impact will come when you are going to implement it. अब आपने implementations को अगर इन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट ही नहीं करना है, तो कहां से क्या फायदा होगा इस चीज का, ठीक है ना। सो द रिकमेंडेशंस वर नॉट इंप्लीमेंटेड, कुछ प्रैक्टिकल भी नहीं थे। डेफिनेटली इट इज अ, यू कैन से, कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी, पैसा बहुत लगता है, पैसा तो लगाना पड़ेगा सरकार को। ओके, सो कोर्ट ऑल्सो इशूड नंबर ऑफ डायरेक्टिव्स विद रिगार्ड टू रोड सेफ्टी, विच इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रोड सेफ्टी council at the state level. They are saying that there should be a state road safety council. Okay, then setting up of road safety fund. Then the action, there was a proposal that road safety action plan should be notified, एक ऐसा action plan लेके आना चाहिए। Okay, so there should be an angle of constitution of district road safety committee, एक डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी भी आपको बनानी पड़ेगी। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द ब्लैक स्पॉट्स। ओके, कई जगह पे ब्लैक टर्न होते हैं, लाइटिंग नहीं है, वहां पे लाइटनिंग नहीं है, रात के टाइम एक्सीडेंट हो जाता है। देन अनदर एंगल इज दैट यू हैव टू कैरी आउट रोड सेफ्टी ऑडिट्स। ओके, रेगुलरली रोड सेफ्टी ऑडिट कीजिए आप अपने एरिया के अंदर, और आई एम सेइंग दैट दिस कैन बी कैरिड आउट अंडर द, यू कैन से, लीडरशिप ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। जो आपके डीसी साहब है वो भी इस चीज को दिखवा सकते हैं, कोई कमेटी अपॉइंट कर सकते हैं। Then the road safety equipment. Now definitely you have to acquire more road safety equipment. Okay, there should be trauma care center, and then inclusion of road safety education in your curriculum. School curriculum में आपको ये लोगों को सिखाना पड़ेगा। Okay, so this is what Supreme Court has said.
एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड टू बी मेंशन्ड इन योर आंसर. ये सारी चीजें आपको अपने आंसर में लिखनी होंगी. एंड द लैंग्वेज दैट यू विल बी यूजिंग, यू विल बी मेंशनिंग दैट सुप्रीम कोर्ट हैज सजेस्टेड दिस, सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड द डायरेक्टिव. ओके, आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा इस चीज को भी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है एंड दीज आर द थिंग्स दैट आर टू बी लुक्ड अपॉन. नाउ देयर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैड हैपेंड. ओके, so we have this Motor Vehicle Act 1988 which was amended in 2019. इसको अमेंड किया गया था एंड वन ऑफ द मेजर अमेंडमेंट्स वर रिलेटेड टू द इंक्रीज इन ट्रैफिक वॉयलेशन फी, कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक वॉयलेशन फी को यहाँ पे इंक्रीज किया गया था, जो चालान के प्राइसेस थे उसको काफी बढ़ा दिया गया था. बट इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर मेजर, there was a major backlash from the states. Now people starting criticizing this particular development कि चलान इतना ज्यादा क्यों कर दिया आपने, ठीक है ना, इतना ज्यादा क्यों कर दिया चलान. इवन द स्टेट्स दे वर रिलक्टेंट टू कम आउट विद द इम्प्लीमेंटेशन, स्टेट्स ने भी इस चीज को रिफ्यूज कर दिया था. ओके, सो दैट्स अ मेजर चैलेंज, this is a major challenge. That's why we are saying that you need to make sure that the state and the union they are on the same page, otherwise इस तरीके का disagreement होता रहेगा. एंड आई एम सेइंग दिस व्हेन द फाइन्स आर वेरी लेस, अगर फाइन आपके बहुत कम है, ओके, देन द डेटरेंस इफेक्ट विल बी गॉन. जो डर होता है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है ना. सो लोगों को ये मालूम है कि दैट ओके, इफ इवन इफ वी आर ओवर स्पीडिंग, कुछ नहीं होगा, चलान भर देंगे, 100 रुपए का चलान ही तो है, ठीक है ना. दिस इज हाउ पीपल हैव माइंडसेट, लोगों के दिमाग में एक तरीके से ये माइंडसेट चल रहा है यहाँ पे. ओके, so this is the point that you have to understand, this is the point that you have to understand, and this is how it's a major challenge. ये कहीं ना कहीं हमें एक चैलेंज दिखता हुआ नजर आ रहा है. ओके, हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस, दिस इज व्हाट वी हैव टू वेट एंड वॉच, क्या इससे डील करेंगे. अब नेक्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज रिलेटेड टू द एनफोर्समेंट मैन पावर. नाउ पुलिस, द एंगल इज दैट देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, पुलिस के अंदर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है. ओके, एंड व्हेन यू लुक इनटू मल्टीपल कमिटीज दैट हैव सजेस्टेड, सो इवन द सेकंड एआरसी और यू कैन से एनी ऑफ द पुलिस रिफॉर्म कमिटीज, जो भी पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड कमिटीज हैं, दे हैव रिकमेंडेड वन थिंग, दैट कैन वी एक्सप्लोर द रोल ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन ट्रैफिक मैनेजमेंट. क्या आप ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई रोल एक्सप्लोर कर सकते हो, द लोकल बॉडी का. ओके, सो दिस इज व्हाट हैज बीन सजेस्टेड, दिस इज व्हाट हैज बीन सजेस्टेड. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन ऑटोमेशन, हम ऑटोमेशन के ऊपर काम कर रहे हैं. ओके, बट दिस ऑटोमेशन इज प्राइमरीली लिमिटेड टू द लार्ज सिटीज. व्हाट अबाउट द स्मॉल सिटीज, टीयर 2 सिटीज का क्या होगा, ठीक है ना, आपको उनके बारे में भी तो सोचना है. दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट. ओके, so there is another angle that Bureau of Police Research and Development, they have suggested a formula to calculate the number of traffic policemen that are required in any particular district. Now first thing is that this is also a good move in the sense that this is not one size fit all approach. ये one size fit all approach नहीं है. देखो दिल्ली के अंदर ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट अपनी है, मोर नंबर ऑफ पीपल माइट बी रिक्वायर्ड हियर. सेम वे इन चंडीगढ़ the more number of like situation can be completely different. In any other city of Haryana, UP or you can say Punjab, the requirement may be different, so you cannot have a one size fit all strategy. That's why the Bureau of Police Research has suggested that it should be based on the district. ओके, कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैलकुलेट कीजिए कि हाउ मेनी पुलिसमैन विल बी रिक्वायर्ड, एंड दैट डिसीजन विल बी टेकन विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, कितना व्हीकल आपका रजिस्टर हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट दैट, एंड देन यू कैन कैलकुलेट दैट कि भी हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड टू रेगुलेट, और यू कैन से उसको संभालने के लिए कितने लोग चाहिए. सो दिस इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर. ये सारी चीज आपको यहाँ पे समझनी है. नाउ डेफिनेटली I told you law enforcement staff and equipment, this is the critical component. अगर आपके यहाँ पे शॉर्टेज रहेगी, यू कैन नॉट गो अहेड और आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे. देन अनदर एंगल दैट इज टू बी लुक्ड इनटू, जो कंप्लेंट आती है, दैट इज इनएडिक्वेट फंड्स फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ ब्लैक स्पॉट्स. ओके, सो ब्लैक स्पॉट्स हैं आपके यहाँ पे, ब्लैक टर्न्स हैं आपके यहाँ पे. सो देर आर एरियाज विच विल बी रिक्वायरिंग लाइटनिंग, उधर लाइटनिंग की जरूरत है आपको, ठीक है ना. सो फॉर दैट पर्पज डेफिनेटली द मनी इज इन्वॉल्व, पैसा वहां पे चाहिए होगा. इवन इफ यू वांट टू रिमूव द टर्न्स, आपको टर्न्स सीधे करने के लिए देयर अगेन द मनी विल बी रिक्वायर्ड, कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड. सो इफ देर इज इनएडिक्वेट
inadequacy of funds, definitely you cannot deal with this. आप इसके साथ deal नहीं कर सकते हो. Okay. Another angle is that like 60% road accidents they are reportedly because of overspeeding. Overspeeding की तरफ वजह से होते हैं. And one of the reason for the overspeeding is that signboards are not there on the highways. आपके यहाँ पे साइन बोर्ड ही नहीं लगे होते. ओके, सो पीपल विल नॉट इवन रियलाइज दैट दे आर ओवर स्पीडिंग. ये भी एक प्रॉब्लम है. देर इज एन इंटरेस्टिंग एंगल दैट यू हैव टू लुक इनटू. नाउ दे आर सेइंग दैट द ड्राइवर्स, द lorry drivers, the truck drivers that we have here, they do not get adequate time to rest. उनको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता. their wages are low, उनकी wages जो है वो काफ़ी कम है. ओके, सो when their wages are low they do overtime, उनको overtime करना पड़ता है उस चीज़ को लेके. वो overtime करते हैं, definitely your body is not at rest, आपकी body exhaust होती है. And in that particular condition when they come out and they ride their lorry on the road, there are high chances that they will meet the accident. Accident के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. Okay, that's the point which has been highlighted. It's a good point. एंड लाइक दे डू नॉट हैव वीकली ऑफ, कोई वीकली ऑफ नहीं होता उनका, तो बॉडी रेस्ट ही नहीं करती तो नींद आ जाती है कभी कभी. एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज फॉर एक्सीडेंट. ओके, सो इट इज ऑल्सो सेड दैट लाइक देयर सर्विस कंडीशन नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड. देयर सर्विस कंडीशन नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड. उनके सर्विस कंडीशन को भी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा. ठीक है ना. सो ये पॉइंट थोड़ा समझना जरूरी है. ओके, सो अनसेफ रोड्स. नाउ अनदर चैलेंज इज दैट like still the roads are very unsafe in India. Okay, the point here is that the way we issue the driving license, आपको यहाँ पे driving license जैसे मिलता है, that particular thing is very very you can say faulty process. बिल्कुल faulty process है यहाँ पे. Okay, so this is how the problem is. So you have to improve this thing as well. बहुत जगहों पे तो corruption, bribery उससे भी काम हो जाता है. ठीक है ना, आपको अपना टेस्ट भी देने की जरूरत नहीं पड़ती. दिस इज हाउ द सिचुएशन इज. ये भी एक तरीके की चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी. ओके, नाउ देर इज नो स्टैंडर्ड रिटन और रिगरस प्रैक्टिकल टेस्ट. जैसा मैंने आपको बताया, देर इज नो इंस्टीट्यूट फॉर रिफ्रेशर ट्रेनिंग. कोई ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट नहीं है. ठीक है ना. सो दिस इज हाउ वी कैन फिगर इट आउट दैट हाउ योर रोड्स आर अनसेफ. अनट्रेन्ड ड्राइवर्स घूम रहे हैं यहाँ पे, जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में ट्रैफिक रूल्स नहीं पढ़े हैं. ओके, ट्रैफिक रूल्स कितने लोगों ने पढ़े होते हैं? लाइक हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड ट्रैफिक रूल्स बिफोर गोइंग फॉर योर टेस्ट? आप अपने लाइसेंस टेस्ट के लिए जाने से पहले कितने लोग थे जिन्होंने ट्रैफिक रूल्स पढ़े थे? ओके, अनदर एंगल इज दैट द you can say the guidance, or you can say the law will say that, rules will say that you have to wear helmets. आपको हेलमेट लगाना चाहिए टू व्हीलर के लिए. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. नाउ नो डाउट लाइक हेडगियर इज मैंडेटरी, इट इज नॉट एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली. ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट ही नहीं किया जाता है. नाउ आई बिलोंग टू अ सिटी कॉल्ड हिसार. ओके, इट्स अ 2-tier सिटी. नो वन वेयर्स हेलमेट. कोई हेलमेट नहीं डालता वहां पे. ठीक है ना, उनको ऐसा लगता है कि उनके बाल खराब हो जाते हैं. ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम. एंड सेम इज द कंडीशन विद अदर सिटीज एज वेल. आपके आसपास भी ऐसा हो रहा होगा. इफ यू आर नॉट लोकेटेड इन मेट्रोपॉलिटन सिटी और यू नॉट लोकेटेड इन से चंडीगढ़, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं रहते हो, चंडीगढ़ में नहीं रहते हो, सो डेफिनेटली यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दिस थिंग. आपको जरूर ये देखने को मिल रहा होगा. ठीक है ना, कि दैट पीपल दे डोंट वेयर हेलमेट and enforceability is not there. Okay, so this is how the problem is. Now other than that, like offenses by the juveniles, they are not enforced strictly. Now normally people under the age of 18, okay, should not drive their vehicle. वो अपना vehicle नहीं drive कर सकते. But the point here is that I am saying myself, there are people who start driving at the like when they are in class 6th, जो क्लास 6th में भी ड्राइविंग कर रहे होते हैं, स्कूटर लेके घूम रहे होते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ लाइक हाउ मच सीरियस वी आर विद दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट. सो वी हैव टू रिमूव ऑल दीज प्रॉब्लम्स. ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखी हुई हैं. सो यू हैव टू डील विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स. दिस इज व्हाट हैज बीन सजेस्टेड हियर. यही सारी चीजें बताई हैं. ठीक है ना. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन वी कम्स टू एक्सीडेंट, ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड गोल्डन आवर. नाउ इफ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड असिस्टेंस विद इन अ पर्टिकुलर टाइम, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी होके अगर आप असिस्टेंस दे पाते हैं, सो
that is going to save lot of life. Okay, so जो आपका emergency response system है, whatever like the number that has been given for ambulance service and all, you have to make sure that that is being implemented with the true spirit. वो बहुत अच्छे से operate करना जरूरी है, and this is what has been told in this particular editorial. Okay, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं. So we will move to the next part now. आगे चलते हैं. Etching a trade line to bond beyond oil. Okay, so this editorial is regarding the India UAE free trade agreement, and this is going to enable two-way investment. We are also going to invest there, they are also going to invest in India. Okay, so there are chances that India UAE trade relations will improve after this, and it's a really good thing. It's a really good development in the sense that we are also in talks with other countries regarding the free trade agreement. हम बाकी countries के साथ भी बात कर रहे हैं. Okay, so this is the point you have to understand. This is the point you have to understand. अब बात अगर कर रहे हैं आपके यहाँ पे बाकी जो है कंट्रीज के साथ, सो यू विल गेट अ बेंचमार्क. आपको एक बेंचमार्क मिल जाता है कि हाँ जी यूएई के साथ हमने कर लिया. अदर कंट्रीज विल आल्सो से दैट ओके इंडिया इज सीरियस एंड लेट्स गो अहेड विद द एग्रीमेंट. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग डन नाउ. एंड now the point here is that like there are few things that are important here. Okay, now please pay attention. This is your मेंस 2017 क्वेश्चन. ये 2017 का आपका क्वेश्चन है. द क्वेश्चन ऑफ इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्रोसेस. ओके, एनालाइज इंडियाज एनर्जी पॉलिसी कोऑपरेशन विद वेस्ट एशियन कंट्रीज. अब इन्होंने बोला है कि बताइए एनर्जी का क्या सीन है. नाउ द पॉइंट हियर इज दैट like if you talk about energy, so we get lot like primarily fossils की अगर हम बात करें, so आपका क्रूड ऑयल का सप्लाई तो बाहर से ही आता है, ठीक है ना. यू गेट योर नेचुरल गैस फ्रॉम देयर. ओके, नेचुरल गैस भी आपको वहां से मिलती है. But here we are going ahead with UAE with this free trade agreement, which is saying that we will go beyond oil because there are lot of things that are happening. तेल की इंडस्ट्री के अलावा भी बहुत कुछ है जो हो रहा है. ओके, यूएई दे आर ऑल्सो डाइवर्सिफाइंग देयर इकोनॉमी. यूएई जो है अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है. यूएई इज इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट. इंडिया के अंदर उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है ना. सो दिस इज हाउ थिंग्स आर बीइंग डन नाउ दैट वी आर थिंकिंग बियॉन्ड फॉसिल. हम फॉसिल से दूर की सोच रहे हैं यहाँ पे. ओके, so definitely the question was around only energy policy, but here we are now exploring things beyond the energy. हम एनर्जी से दूर की सोच रहे हैं बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ रिन्यूएबल. ये रिन्यूएबल का एरा आ गया है, सोलर है यहाँ पे. ओके, सो फॉर दैट यू माइट नॉट नीड हेल्प फ्रॉम यूएई. तभी आपको थोड़ा दूर का सोचना पड़ेगा. सो वी हैव समहाउ like concluded this free trade agreement. Okay, it's a really good development because it is going to facilitate Indian industries integration into global value chain. Okay, in the sense that गल्फ कंट्रीज के अंदर भी हमें मार्केट एक्सेस मिल सकता है थ्रू यूएई. सो यूएई कैन emerge as a gateway. Okay, it can emerge as a gateway where which to by using which we can enter the other markets. Now as I told you, we have improved our free trade agreement, you can say strategy, and we are signing it with UAE. और तो आइडिया क्या एक्सप्लोर किया गया था कि लेट्स कंक्लूड इट वेयर बोथ द कंट्रीज आर ऑन सेम पेज. जिस जिस चीज पे दोनों कंट्रीज सेम पेज पे हैं, ओके, जहां पे डिसएग्रीमेंट नहीं है, एटलीस्ट कंक्लूड दोज पर्टिकुलर एरियाज फर्स्ट. सबसे पहले आप वो डिस्कस कर लो. लेटर ऑन वी विल डिस्कस अदर एरियाज. ओके, तो एक बार ये एग्रीमेंट हमने कंक्लूड कर लिया. नाउ द पॉइंट हियर इज दैट वी आर इन टॉक्स विद यूनाइटेड किंगडम, यूएई, नॉट यूएई, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, जीसीसी कंट्रीज, सबके साथ हम बात कर रहे हैं. ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड एज आई टोल्ड यू दैट UAE has emerged as one of the important economic hub in the world. Okay, they have this Vision 2021 document which is saying that they will be diversifying their economy and they will reduce their dependence on oil. So it means that opportunity is huge. आपके लिए भी तो अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी हो जाती है. ओके, सो आई एम सेइंग दैट इफ यूएई वांट्स टू एमर्ज एज एन आईटी बेस्ड इंडस्ट्री, अगर यूएई कल को आईटी बेस्ड इंडस्ट्री बनाना चाहता है, आईटी बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाहता है, सो डेफिनेटली इन दैट पर्टिकुलर एरिया, इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर एज वेल, इंडिया हैज अ गुड चांस. हमारा चांस काफी अच्छा होगा, ठीक है ना. दिस इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, दिस इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड दे आर फोकसिंग ऑन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ देयर इकोनॉमी. बिल्कुल वो कर रहे हैं, एंड दे आर डाइवर्सिफाइड देयर इकोनॉमी.
उन्होंने अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड भी कर दी है। ओके, नाउ दे आर लुकिंग इनटू सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल प्रोडक्शन के अलावा इन सब चीजों को भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। दिस इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ यूएई एंड India, they both want to deepen their trade ties, okay? And right now, like India UAE trade merchandise has been valued at $52 billion, okay, which is quite high. And UAE, like making UAE India's third largest trading partner, okay, this is a really significant number. Now you can note down this particular fact, आप इस fact को note down कर सकते हो, ठीक है ना? Because last year they did ask a question related to like with which country India is going to have a maximum trade, उसके अंदर चार countries के नाम थे. So here also like this particular information is going to be helpful for you. ये सारी चीज आपके लिए important है, ठीक है ना? Now the aim is to boost bilateral merchandise trade to above $100 billion and service trade टू 15 बिलियन इन 5 years. ये हमारा टारगेट है, काफी अच्छा टारगेट है, अचीवेबल भी है. ओके, नाउ द पॉइंट हियर इज दैट लाइक इंडियन एक्सपोर्ट्स दे आर ऑलरेडी गेनिंग द स्ट्रेंथ. आप अगर करंट डाटा देखोगे तो उसके अंदर देर इज लॉट ऑफ पॉजिटिविटी रिगार्डिंग द इंडियन एक्सपोर्ट्स. इंडियन एक्सपोर्ट्स ने काफी अच्छा किया है. ओके, सो वी ऑलरेडी हैव रीच द फिगर ऑफ $400 billion ऑफ मर्केंडाइज ट्रेड. दिस ट्रेड एग्रीमेंट इज फर्दर गोइंग टू इंप्रूव इट. जो ये हमारा ग्रोथ मोमेंटम हमने गेन किया है, दिस ग्रोथ मोमेंटम विल बी मेंटेन्ड बाय दीज टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स. एंड आई एम सेइंग दैट व्हाई नॉट जस्ट यूएई, व्हाट अबाउट अदर कंट्री? सबके साथ आप कर लो. ओके, सबके साथ आप ये एक तरीके का एग्रीमेंट साइन कर लो, सो दैट यू कैन हैव दिस ग्रोथ मोमेंटम. And another point that you have to understand, like there are areas where Indian export can play important role. So you have electronics, automobile, other engineering products. Those products can enter the UAE market. And I'm saying that why only UAE market? Through UAE, it can also reach out to the other Arabic countries market. बाकी की जो मार्केट है वहां पे भी वो जाया जा सकता है, ठीक है ना? So this is the point you have to understand. Now UAE's investment in India is estimated to be around $11 billion, which is a good, which makes it the ninth biggest investor in India. देखिए इतना छोटा सा कंट्री ninth biggest हो जाता है. On the other hand, many Indian companies they have set up their manufacturing units, okay, either as joint venture in some specialized economic zone and in different areas. हम लोग भी अच्छे से काम कर रहे हैं. Many Indian companies they have invested in the tourism, hospitality, healthcare, education sector. Okay, so this is how we are progressing our equation relations. And right now we are aiming to achieve 1 trillion US merchandise export, okay, and 1 trillion of services export by 2030. Now this is the target that we have. इतना बढ़िया आपका target है, and to achieve that target, these type of free trade agreements are going to be a big help. Now, as I told you, UAE is a party to several regional bilateral free trade agreements, including GCC. तो हम UAE के थ्रू बाकी जगहों पे अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे. ओके, UAE में यू हैव टू जस्ट एस्टैब्लिश अ यूनिट, एक आपको अपना ऑफिस खोलना पड़ेगा, एंड विद दैट यू कैन हैव द एक्सेस टू अदर एरियाज. दिस इज हाउ द स्ट्रेटजी कैन बी मूव्ड. ओके, ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है. Then apart from that, like under Greater Arab Free Trade Agreement, the UAE has free trade access to Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, n number of countries are there. Okay, so हमें उन areas का भी access मिलेगा. And specifically if you talk about Indian handlooms, handicraft, textile and pharma. Now if you talk about handlooms, handicraft and textile, they are labor intensive industries. Okay, वो labor intensive industry है. It means that there is a good opportunity फॉर जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है इफ वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर इक्वेशन विद देम. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट पिक्चर दैट वाज एक्सप्लेन्ड दैट हाउ दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर अस. किस तरीके से हमारे लिए ये एग्रीमेंट यूजफुल होगा, दिस इज व्हाट हैज बीन टोल्ड हियर. ओके, सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. आगे अगले पार्ट में जाते हैं. बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, लेट मी एड्रेस योर डाउट. सो अंकित गुप्ता इज सेइंग, सर, इज इट जनरली आई सीन सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर इन हाई कोर्ट, इज इट नॉट decrease the morale of high court and reduce the people trust in high court? See, you need to understand there is a system here. एक सिस्टम बनाया हुआ है और उस सिस्टम के अंदर हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ही है, ठीक है ना? So like appeal has to go from high court to supreme courts. On there is nothing wrong in it. This is only a professional system that we have. So हम इसे ये नहीं बोलेंगे कि वो morale down करता है. They are very professional individuals. So Ankit Kumar Gupta is saying, sir, it is not against Achar Sanhita, got time polarize the water. Okay, sir, why UP election going on phases time? Okay, okay, two free cylinder coming up.
चलो ठीक है, ये चलता रहता है फेजेस इन द सेंस दैट बिकॉज इंडिया इज अ लाइक ह्यूज कंट्री, सो यू रिक्वायर मोर रिसोर्सेज, आपको और ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, देर इज लॉट ऑफ ट्रूप मोबिलाइजेशन दैट इज टू बी कैरिड आउट, ट्रूप मोबिलाइजेशन करना पड़ता है। सो ऐसा होगा, सपोज पंजाब के अंदर 20th को इलेक्शन होता है, ओके, सो इलेक्शन करवा के 20th फरवरी को द सेंट्रल फोर्सेस दे विल नॉट मूव टू द यूपी, बिकॉज यूपी के अंदर बाकी फेजेस में इलेक्शन चल रहे हैं, तो वहां से आपकी फौजें जो हैं वो जो सेंट्रल लाइक सीआरपीएफ एंड ऑल जो असिस्ट करती हैं इलेक्शन कराने में, दे विल बी मूविंग टू दैट पर्टिकुलर पार्ट, वो वहां पे आगे चले जाते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, ओके। सो ये पॉइंट समझना जरूरी है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ओके। सो आप बनाते रहिए डेली करंट अफेयर नोट्स, नोट मेकिंग इज अ गुड हैबिट। चलिए, सो भक्ति सुनावर, ओके, सोनाविन। नाउ इज द पोस्ट कोल्ड वॉर सिक्योरिटी ऑर्डर चेंजिंग, ओके। अब you need to understand one thing, what was the post cold war security order. Now security, this cold war ended in 1989 with disintegration of USSR. अब USSR आपका डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ओके, USSR was disintegrated. It means that there was only one major power, that was United States. अब एक ही मेजर पावर रह गई थी, that was United States, ओके। बट इफ यू लुक इन टू दिस एस्पेक्ट, अगर हम यूरोप की जो है सेफ्टी को देखें, ओके, सिक्योरिटी को देखें, नाउ रशिया वॉज स्टिल अ बिग कंट्री, रशिया वॉज स्टिल अ बिग एंड डोमिनेंट मेजर पावर, ओके, डोमिनेंट मेजर पावर। Considering that European countries they still had the fear in their mind, उनके दिमाग में अभी भी जो है इस टाइप का डर वो एग्जिस्ट करता था। एंड राइट नाउ दे आर सेइंग दैट दिस वाज द अरेंजमेंट दैट वाज देयर इन द कोल्ड वॉर, और आज की डेट में सवाल आ रहा है कि इज द पोस्ट कोल्ड वॉर सिक्योरिटी ऑर्डर चेंजिंग। अब पॉइंट इज दैट NATO, which was primarily formed to deal with USSR, यूएसएसआर वॉज डिसइंटीग्रेटेड, यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया था, ओके, बट दिस नेटो इट केप्ट ऑन एक्सपेंडिंग, ये नेटो ओवर द ईयर एक्सपेंड करता रहा, एंड दिस इज हाउ दिस एक्सपेंशन ऑफ नेटो हैज नॉट गॉन वेल विद द रशियंस, और रशियंस को यही बात पसंद नहीं आ रही है दैट व्हाई आर यू कीप ऑन एक्सपेंडिंग दिस पर्टिकुलर नेटो, ये जो ओपन डोर पॉलिसी आपने बनाई हुई है ये कब जाके रुकेगी। वी हैव अ सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न, एंड दिस इज व्हाट रशियंस आर showing this particular point that they have a security concern with the help of strength, military strength से वो ये दिखाना चाहते हैं, and this has started a new debate. यही एक डिबेट है कि is the post cold war security order changing in the sense that is Russia again assertive, क्या रशिया अब फिर दोबारा assertive हो जाएगा। एंड द पॉइंट हियर इज दैट व्लादिमीर पुतिन ने यही टाइम क्यों लिया, लाइक व्हाई व्हाई व्हाट सो स्पेशल इन दिस टाइम। टाइमिंग के अंदर अगर आप देखेंगे, सो देर आर थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट, देर आर फ्यू इवेंट्स दैट आर इंपॉर्टेंट। यूएस somehow it will be called defeated in Afghanistan, US अफगानिस्तान में डिफीट होता है, this is one angle, okay. US is focusing on इंडो पैसिफिक रीजन, US इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर फोकस करना चाहता है बिकॉज ऑफ दे वांट टू काउंटर चाइना, चाइना को काउंटर करना है यहाँ पे। Now considering these particular developments, Putin thought that this is the right time to show something to these Europeans with strength, कि भाई मैं अपनी बात बनवाऊंगा दैट यू आर कीप ऑन एक्सपेंडिंग दिस नाटो, आप इस नाटो को हर बार एक्सपेंड कर रहे हो, एंड व्हाई आर यू डूइंग इट, एंड इफ यू आर डूइंग इट वी आर गोइंग टू शो यू द प्लेस, अगर आप इसको नहीं रुकोगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे रोकना है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव एक्टिवेटेड देयर फोर्सेस इन यूक्रेन, अराउंड द यूक्रेन, यही पूरा गेम चल रहा है। So Vladimir Putin, he thought that US might not come to rescue these Europeans. और अगर आए भी गा तो यही चाहेगा कि शांति बनी रहे, because they are now focusing on Indo-Pacific.
So this is the whole calculation and the reason for the timing. और उसी में ये सवाल आता है कि लाइक आर वी मूविंग अवे फ्रॉम द अरेंजमेंट दैट वी हैड इन द पोस्ट कोल्ड वॉर? क्या हम वहां से हटते जा रहे हैं और रशियंस आर कमिंग अप एज अ मेजर प्लेयर इन द रीजन? क्या है मामला? ओके, सो दिस इज हाउ द सिचुएशन इज. यूक्रेन क्राइसिस हैव ब्रॉट this thing to light that the security architecture in Europe is highly unstable. And I'm telling you this thing, you talk about World War One, World War Two, like everything was, the origin was in Europe, origin uska Europe mein hi tha. So tomorrow if another trouble has to appear, there are chances that it will again come from Europe. ऐसा हो सकता है कि वो दोबारा दोबारा यूरोप से आ जाए. एंड दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज इमर्जिंग दैट वाकई क्या हमारा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चेंज हो रहा है? ओके, इन रियलिटी लाइक क्या सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वाकई चेंज हो रहा है? सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन दैट इज emerging here. Okay, so this editorial talks about few things. So NATO has this expansionary open door policy and this remains unaddressed. This is what Russians are saying. Russians को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इसी चीज से है, दैट व्हाई यू आर कीप ऑन एक्सपेंडिंग द नेटो. नेटो को किस बेस पे आप बार बार एक्सपेंड करते जा रहे हो? ओके, एंड दैट्स व्हाई द फोकस इज ऑन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन यूरोप. यूरोप के अंदर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आपका एक बार फोकस में आ गया है, एंड दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम, दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम. ओके, सो वही चीज यहां पे बताई गई है, ठीक है ना. दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम एंड समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू डील विद सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है. ओके, स्पेसिफिकली फॉर इंडिया नाउ यू कैन नॉट टेक चांसेस. हम साइड्स नहीं ले सकते हैं. वी कैन नॉट आउटराइटली रिजेक्ट रशियंस एंड नाइदर वी कैन सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट्स मेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स. हम ना तो यूएस को खुश कर सकते खुल के बोल के भी जी रशिया ने गलत किया, बिकॉज रशिया इज आर गुड एलाय, हमारा अच्छा ट्रेडिशनल एलाय है वो, ठीक है ना. सो दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझना जरूरी है, ठीक है जी. सो दे आर सेइंग दैट लाइक आर्किटेक्चर खतरे में है, कुछ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, बिकॉज when the equilibrium is disturbed then only such type of problems appear. उसी के बाद ही ये चीजें सामने आती हैं. If the equilibrium is maintained it means that everyone is happy, सब लोग खुश हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम्स ज्यादातर नहीं होती हैं. But if this problem is appearing it means that somehow the equilibrium has been disturbed. And right now Putin is trying to say that if you want a predictable and stable relationship with Russia then please do address the security needs of Russia. रशिया के सिक्योरिटी नीड्स का आपको ख्याल रखना पड़ेगा. दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू प्रूव, दिस इज व्हाट ही वांट्स यूरोपियन टू डू. एंड द पॉइंट हियर इज दैट if you see the recent developments now, French leader they had talks with Russia. France ने रशिया के साथ बात की, और Germany is also looking forward to have talks with Russia. Germany भी बात करने की सोच रहा है. Okay, European countries they don't want fight. यूरोपियंस जो हैं दे डोंट वांट फाइट. ओके, वो यूनाइटेड स्टेट्स से थोड़ा हट के सोच रहे हैं, बिकॉज दे नो वन थिंग दैट दे हैव टू लिव विद रशिया. इन लोगों को रशिया के साथ रहना पड़ेगा. यूएस इज अ सेपरेट एंटिटी, यूएस दूर है रशिया से, बट दे हैव टू लिव विद रशिया. दिस इज द पॉइंट. एंड व्हेन नाउ राइट नाउ रशियंस आर समहाउ they have been successful in keeping the attention of these western countries, that you have to discuss this matter. आपको ये मैटर डिस्कस करना पड़ेगा, यूक्रेन की सेफ्टी सिक्योरिटी का मैटर डिस्कस करना पड़ेगा. ओके, दिस इज समहाउ कंसिडर्ड एज अ विक्ट्री फॉर रशियंस. ये रशियंस के लिए एक विक्ट्री मानी जा रही है. द पॉइंट इज दैट रशियंस आर ऑल्सो लाइक अंडरस्टैंडिंग वन अनदर पॉइंट दैट दे मे टेक सम ऑफ द पीसेज ऑफ यूक्रेन, कुछ एरिया हो या आधा यूक्रेन को कब्जा भी कर लें, बट देयर इनसिक्योरिटी विल ग्रो. नाउ व्हाट इफ द सिविल वॉर स्टार्ट्स इन यूक्रेन? अगर सिविल वॉर स्टार्ट हो गया तो क्या करोगे? ओके, देयर विल बी अ मेजर लॉस ऑफ लाइफ. रशियन सोल्जर्स दे विल ऑल्सो डाई, वो लोग भी मरेंगे. सो रशियंस मस्ट हैव कैलकुलेटेड अबाउट दीज थिंग्स हियर. एंड द impact of any action that NATO takes in terms of sanctions, okay, will be first felt in Europe and not in United States. That's why European countries they have the policy of accommodation. वो इसको शांति से डील करना चाहते हैं. Okay, they are still ready to accommodate. They are still ready to accommodate with this particular crisis. Okay,
So one of the fundamental demand of Russians were like Normandy process, which is the Russia, Germany, France, Ukraine initiative to implement the Minsk Accord. Okay, a Minsk Accord साइन किया गया था related to relation between Ukraine and Russia. So they are saying that they want this process to prevail. आप expansion मत करो. Okay, and I already told you क्यों उन्होंने ये टाइमिंग पुट किया, बिकॉज यूएस इज बिजी विद इंडो पैसिफिक. वो अपना फोकस इंडो पैसिफिक पे डालना चाहते हैं. Okay, they knew this thing that US is busy with China. They have been defeated here in Afghanistan. अफगानिस्तान में हार गए. Okay, so अफगानिस्तान में हार गए, अब चाइना की तरफ उनका फोकस है, तो यूएस माइट नॉट इंटरवीन. और रशियंस ने इसी को ही सोचा कि दिस इज द राइट टाइम टू डू समथिंग, कुछ बड़ा करते हैं. एंड दैट्स व्हाई दे हैव चोजन दिस पर्टिकुलर टाइम. ओके, सो अदर देन दैट देयर इज नथिंग मच. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. आगे चलते हैं. So Jaishankar leaves for Germany, France. Focus remains on Russia. Now, as I told you, Russia is, or you can say, talk of the town. So United States, they have issued multiple statements, and like recently during the Quad summit as well, they raised the aggression showed by Russians. Okay, but we were very much categorical about this thing, and look at the statement made by S. Jaishankar. So he made a statement that we don't support national sanctions. Okay, India don't support the policy of sanctions. हम sanctions की policy को support नहीं करते हैं. It means that even if US wants to bring sanctions on Russia, so there are chances that India might not support United States, and this is the right thing to do. This is the right thing to do. Okay, because you cannot do away with your traditional ally. आप अपने ट्रेडिशनल फ्रेंड के साथ नहीं दूर जा सकते. एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सोवरन डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिया. ओके, सोवरन डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिया, बिकॉज वी आर एन ऑटोनोमस कंट्री. हम किसी के प्रेशर में आके डिसाइड नहीं करेंगे दैट यूएस इज गोइंग टू प्रेशराइज अस एंड देन वी विल फॉल इन लाइन एंड वी विल स्टार्ट लाइक लिसनिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. ऐसा नहीं होता. वी आर एन ऑटोनोमस कंट्री. ओके, सो वी हैव दिस राइट टू मेंटेन आवर इक्वेशन विद देम, एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. हम वही कर रहे हैं यहाँ पे. हम वही कर रहे हैं. वी आर नॉट opposing Russians. Look at the statements made by your Ministry of External Affairs. Okay, so like they have issued a statement. उन्होंने एक चीज तो ये बोली है कि भाई that we want diplomatic solutions. Diplomatic talks से आप सारी चीजों को कीजिए. Okay, we want diplomatic solutions, and diplomatic talks should be the decider for all the problems. This is what we have said. It's a good thing. It's a good thing. ठीक है ना. एंड अगेन वी आर बैकिंग, लाइक इंडिया अगेन बैक्स द डिप्लोमेसी एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, की बातचीत करके मामले को निपटाओ, कोई भी अगर डिफरेंस है तो. एंड यूनाइटेड स्टेट्स शुड बी रेडी फॉर दैट एज वेल. Okay, so blinking Jaishankar held honest talks on Russia. This is what United States is saying again, and like they understand Indian situation as well. वो India के stance को भी समझ रहे हैं United States वाले. Okay, they also knew this fact that this is a complex issue. इतना serious, इतना सीधा नहीं है ये issue. It's a complex matter. Okay, and India has to make a tough decision, और हमारे पास हम tough decision नहीं ले सकते हैं because we want to have good relations with both of them. Then definitely the focus remained on rule based order, कि भाई international rules को follow करें. Okay, so international rules को follow करें, and primarily this was in case of China, that China is somehow violating the international system that was established. और उस केस में हम दोनों ही इंडिया और यूएस सेम पेज पे हैं. ठीक है ना. सो दिस इज द होल पिक्चर दैट वाज देयर. अदर देन दैट देयर इज नथिंग मच. कुछ खास नहीं है यहाँ पे. ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. आगे चलते हैं सीधा. सो वी आर ऑन दिस पेज नाउ. सो कन्विक्शन रेट इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग cases declining. Okay, see, this is an alarming situation. बहुत ज़्यादा alarming है, in the sense that one of the major problem is that our interstate investigation is very poor. Interstate investigation जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है, because there are different agencies that are involved. बहुत different agencies हैं जो यहाँ पे involved हैं. So when you have different agencies that are involved, definitely it can create a major crisis, in the sense that coordination is a major problem. Coordination भी major problem हो जाती है. Okay, jurisdictions are different. There are a whole lot of issues that are there. So because reasoning those particular points, those particular issues, ये चीज है कि भी
आपके यहाँ पे conviction rate in human trafficking has gone down. Now it could be due to multiple reasons. Sometimes the evidence, it is very difficult to, you can say, gather the evidence. Okay, कभी कभी ट्रेल आपको फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज विक्टिम विल नॉट कम टू लाइट. विक्टिम खुद ब खुद कभी कभी आके पुलिस के अंदर रिपोर्ट नहीं कराता. ओके, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. एंड पीपल हु आर कैरिंग आउट दिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल, दे आर पार्ट ऑफ अ बिगर रैकेट, बिगर नेटवर्क. बड़ा नेटवर्क होता है, बड़ा रैकेट होता है. करप्शन, ब्राइबिंग, ऑल दोज थिंग्स आर देयर. ओके, आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी करप्ट हो सकता है. So these are the reasons that are prevailing, and because of that the conviction rate in human trafficking cases have gone down. ओके, सो ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है ना. सो अदर देन दैट देर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं है यहाँ पे. ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ, आगे चलते हैं. सो रशिया डिमांड्स सिक्योरिटी गारंटी. नाउ दिस इज व्हाट रशियंस आर डिमांडिंग. रशियंस आर सेइंग दैट गिव अस अ लीगल अश्योरिटी. ओके, आप लीगल अश्योरिटी दीजिए दैट रशिया विल रिमेन सेफ. एंड अदर थिंग दैट दे आर डिमांडिंग इज दैट नाउ नेटो एक्सपेंशन शुड बी स्टॉप्ड. हर हिसाब से नेटो का एक्सपेंशन आपको रोकना पड़ेगा. ओके, इट इज नॉट टॉलरेटेड, ये बिल्कुल भी हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं दैट ईयर आफ्टर ईयर यू आर एडिंग मोर मेंबर्स. and right now the debate is around Ukraine and Georgia. So they are saying that both of them, like, you should not allow Ukraine and Georgia to be part of NATO. ओके, इस टाइप की चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है, ठीक है ना. सो दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ये सारी चीज़ है यहाँ पे. विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. नाउ Khamenei rejects the claim Iran wants atomic bomb. No, they are, these statements were there, and definitely they are in talks. They are talks of reviving joint comprehensive plan of action. ओके, दैट ईरान विल स्टॉप इट्स न्यूक्लियर एक्टिविटी. जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी, रोक दिया जाएगा. ओके, डेफिनेटली ईरान कैन गो हैड विद द पीसफुल यूज. अगर पीसफुल यूज इलेक्ट्रिसिटी बनाने तक है लिमिट. ओके, सो दिस इज व्हाट ईरान कैन गो हैड विद. एंड राइट नाउ इट्स अ गुड थिंग इफ दे कम एंड कंक्लूड सम पॉजिटिव एग्रीमेंट. अगर कोई पॉजिटिव एग्रीमेंट वो कंक्लूड करते हैं, इट्स अ गुड थिंग फॉर द वर्ल्ड. ओके, and specifically for the region. Excuse me. So this is the point that is there. Now Blinken urges Russia to declare no intention to invade Ukraine. So yesterday Russians have said the same thing. Russians ने भी यही चीज बताई थी कि we have no intention. Russia issued a video as well that where its troops are moving back. Okay, troops moving back. But like it is said that 1,30,000 troops were activated. Out of that, only 30,000 moved back, and still the number is 1 lakh. 1 lakh soldiers are still there. Okay, it's still a huge number. And this is what NATO countries are saying, that they are not restoring the status quo. तो पहले जैसी सिचुएशन थी वैसी मेंटेन नहीं की है इन्होंने, मतलब रशिया ने अभी तक. दैट्स वाई दे कैन नॉट ट्रस्ट the Russian government and Russian statements. So this is what they are saying. This is what they are saying. Okay. Other than that, there is nothing much. Now China is asking India to ensure fair treatment for Chinese firms. Now recently we have banned another, you can say, set of Chinese apps in India. बाकी हमने कुछ चीज़ों को भी दोबारा बैन किया है. So that's why they are demanding that Indian firms, they should be given the equal security and fair treatment. सो अब देखते हैं क्या इसमें होता है. बॉर्डर एरिया इज स्टिल एक्टिवेटेड. बॉर्डर एरिया आपका अभी भी एक्टिवेटेड है. सो दिस इज हाउ द होल गेम इज. दिस इज हाउ द होल गेम इज. सो दैट्स इट फॉर द डे देन. थैंक यू वेरी मच.